You got the, you're seeing the homework now, like Yes, sir. I didn't get time to check, sir. sorry, what? I didn't get time to check before. Oh, you did not. Okay, wait, fine. Were you notified about the homework? Like, did you get any message that there is an assignment uploaded? I didn't get any for chemistry. I got a notification for physics. I don't have any for chemistry in my assignments. You don't have anything on chemistry. No, I don't have. It's not showing in my account. When was your physics class? My Yesterday. physics class was on. Wait, my physics class was yesterday. Yeah. No, sorry, day before yesterday. I The had same extra as me. classes for physics. It's the extra class of physics. Okay, just give me a second then. Um, One second, let me try reloading my. hmm. What about you, Shita? Did you get the recording? Sir, where can I find the Mhm. recording on the website? Sorry, what? Can I Can you find the repeat that? recording on the website, sir? You cannot find the recording on the website. No, like in which sector, sir? Like diagnosis, class assessment, or classes? Go to classes maybe. I cannot see that, sir. It's still showing that data will be updated soon. Just give me a second. Yes, I'm unable to reach to the recordings. Hmm. Um, So when you go to classes, what is it showing? Sir, it's showing the classes that were conducted, and that's it, sir. View details, it's showing. Then go to view details. Yes, sir, just a minute. View details of the chemistry class, like whatever you have missed. Yes, sir. Recorded lecture. You got it? Yes, I got it, sir. Okay, fine. Okay. So this is how it will be like updated after every class. Okay. So if you ever Yes, miss sir. the class, then you go to this or whatever you went to, and then check that particular lecture. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. So we covered the concept of moles in the last lecture. Do you have some idea about the number of moles? Um,
Kind of, sir. I know about the Avogadro number. You know about the Avogadro number, na? ठीक है, चलिए. Can you try this one? Read the question carefully. In 3 moles of ethane, calculate the following: number of moles of carbon atoms, number of moles of hydrogen atoms, number of molecules of ethane. I hope you guys can give the answer directly for the number of moles of carbon atoms. And please tell me in the Zoom chat itself how many Yes. many moles of carbon atoms are there? Like and Shiza, how many moles of carbon atom? If I have 3 moles of ethane, which 6 is moles, C2. sir. Chat. Sorry, sir. In the Sorry, chat, sir. and the chat, please. Laika, same. So, Laika, I hope you're able to understand the question, right, Laika? Yes. Please send the answer in chat. Send it to Salim. Okay. By the way, also do one more thing. Note down my number. Okay. And please, I will ask you guys to send me answers on WhatsApp sometimes. So you have to just click a photo and send the answer on my WhatsApp. Do you guys have access to a phone, Laika and Shiza? Maybe your personal phone or your mom or your dad's, anyone who is at Yes, home. sir. You guys have an access to phone, na? What Yes, about you, Laika? ठीक है. Yes, sir. Okay. Send the. Have you sent the answer? Send it to Salim. Send it to Salim. Don't send it to Learnivio. The default will be Learnivio, I guess. Send it to Salim. Yep, correct for the first one, Laika. For the second one, number of moles of hydrogen. How many moles of hydrogen atoms will be there? You have 3 moles of ethane. Yes, very good, Shiza. That is correct. Yes, Laika, very good, correct. And the number of molecules of ethane. How many molecules of ethane will be there? Okay. So for this one, you would get 6 moles because we have 3 moles of ethane. Actually, let me write it very distinctly. How many moles? 3 moles of what? Ethane. And each ethane molecule, it has 2 atoms. So I will write 3 to the 6. So I'll write 6 moles. Similarly, in the second one, uh, moles we have 3 moles, and each mole will have how many? 6 hydrogens. It will be what? 3 6 this many moles of hydrogen considered. That means 18 moles. Okay. The third is number of molecules of ethane. So we have molecules will be equal to now very basic unitary method that we have 3 moles and into what is 1 mole? 6.02 10 to the power 23. That is the Avogadro's constant, and this will be equal to 6 is 18, approximately 18.066 to 10 to the power 23. And
we can shift this one decimal point to keep it in scientific notation. It will be 1.8066 into 10 to the power 23. Copy this down. Excuse me, sir. Yeah, tell me. Sir, 10 to the power isn't it 20. 1.8? Yeah, Yes, sir. 24, correct, my bad. You shift the decimal point, it will become 20, it will become 24. Please note down this number, okay? Please note down this number. I will give you a question sometimes and I will just ask you to send it on my WhatsApp. So please note it down. Whenever I ask you to send it on WhatsApp, send the answer on WhatsApp. You will first of all send my number to your mom or your dad. ठीक है और जब आप भेजिएगा ये नंबर को ना then it will appear in blue, then you click on that number, then it will say chat with, and then you can send say salam or hi or anything else, fine? Because I have seen that Yes, some sir. students when they save it, it doesn't appear on WhatsApp directly sometimes. Okay, so to save time, send this to your parent and then it will appear in blue. Click on this number. और किसी को मत भेज दीजिएगा भाई प्लीज. Yes, sir. चलिए now. So Shiza, you are not present in the last lecture, but you since know that Avogadro's constant is 6.022 into 10 to the we are going to move to the next concept, that is the definition of mole as mass. Yes, sir. So please write. Definition of mole as mass. So लिखिएगा. See, very easy. The mass of one mole of any element, any substance, any molecule has its molar mass. The mass of one mole of any element, molecule या substance is called its molar mass. So molar mass, if it is of an element, we call it gram atomic mass. If it is of a molecule, we call it gram molecular mass. So molar mass can be of two types. One we know as, we call it gram atomic mass and gram molecular mass. Fine. Now, I hope you guys have written the definition. You guys are done writing the definition, right? Like and Shiza? Yes, sir. Yes. Now, please see. And don't write anything. Please see. So, for gram atomic mass, what is it? It is the mass of an atom. Mass of an atom in grams. That is known as gram atomic mass. Gram molecular mass, mass of a molecule in grams. Okay. So, the mass of hydrogen atom is 1 AMU. In gram atomic mass, it will be equal to 1 gram. Okay. Now, since this by definition is the 1 mole, so we say that if I take hydrogen, we will have 1 gram hydrogen in each mole. So it will become 1 grams per mole, that is the unit. Right now, you don't focus too much on the unit.
You have to remember and memorize these particular values. For example, the hydrogen's molar mass is 1. For carbon, it is 12, right? For oxygen, it is 16. For nitrogen, it is 14. Okay. Now, sodium and sulfur, remember it together. Sodium is 23 and sulfur is 32. Similarly, for chlorine, you can remember is 35.5. Calcium is 40. Anything else that you should know? See, 1 to 20, so you should remember, right? But these are some values which we are going to use very often, and very often. Okay? So whatever gram atomic mass I have written here, this should be memorized. And I would suggest, please memorize the atomic masses till atomic number 20. Till calcium, you have to memorize all the atomic masses. Okay? But most frequently, we are going to use these particular elements. Now, what is molecular mass? Mass of a molecule in grams. For example, now for this, you have to calculate. For example, if I have H2O, okay, tell me how many hydrogen atoms? How many hydrogen? 2. How many hydrogens? These 2. both of you, 2. And mass of each hydrogen is how much? 1. 1. 1. Next, we have next atom, oxygen. What is the mass of oxygen? 16. 6. So 16 will be equal to how much? 18. 18. Okay. Next, tell me for carbon, CO2. Carbon, what is the mass of carbon? 12. 12. 12 plus. Tell me, what should I write? 2 into 16 16. 2, into 2. 2 into 16, 16 into 2. This will be equal to what? 12 plus 32, that will be equal to 44. 44. Right? Next, Yes. we have, for example, NaOH. Tell me, what should I write first for sodium? 23 23 plus plus 23 plus 16 plus 1. 16 plus 1. plus 1. This will be equal to how much? 50. 40. 40. Yes, sir. 40. देखिए 40 ना. Yes, sir. 6 एक 16 एक 17 3 20 और 20 40. हिंदी आती है आप लोग को? Yes, sir. What about you, Laika? I mean, I know Hindi, but I can't count in Hindi till after 20. आप भाई हम बता रहे हैं आपको ना. Where are your parents from, Laika? They're from Jharkhand, Ranchi. आपके झारखंड के एक तो रांची के हैं. आप अपने अम्मी अब्बू से सीखिए. अब्बू आपके झारखंड के है ना? Huh? He would know, right? He would know, right? Yes. गिनती उनको आती होगी ना हिंदी की. सीख Yes. लीजिए, सीख लीजिए. Hmm. बहुत बहुत ज्यादा काम आएगा. टेबल कहाँ तक याद है आपको, लायका? Table? Hindi में? हिंदी में नहीं, इंग्लिश में. Oh, English में 12 तक? बस. और इससे ज्यादा? आपको फादर को नहीं पता. आप पूछिएगा, पूछ के देखिएगा एक बार. उनसे कहिएगा आपको सर, आपको पापा को पहाड़ा कहाँ तक याद है, क्या पूछिएगा? पहाड़ा? क्या कहाँ तक आता है? पहाड़ा, हाँ पहाड़ा, क्या पूछिएगा? आपको पहाड़ा कहाँ तक आता है? हाँ पहाड़ा कहाँ तक आता है. यू वुड अंडरस्टैंड पहाड़ा. फिजा, व्हाट अबाउट यू? यू अंडरस्टैंड हिंदी? I understand it, but I don't know the meaning of pahada, sir. पहाड़ा का मतलब टेबल होता है. Okay, sir. ये हम पूछ रहे, वेयर आर यू फ्रॉम फिजा? Sir, I'm from Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो, आई मीन दी, क्या लैंग्वेज है आंध्र प्रदेश की? Telugu, sir. तेलुगु. यू ओके, फाइन, तेलुगु. ठीक है. तो आई थिंक घर में क्या बोलते हैं आप, हिंदी बोलते हैं या फिर तेलुगु बोलते हैं? Hindi, sir. Hindi and English. इंग्लिश भी बोलते हैं, घर में भी इंग्लिश बोलते हैं. Yes, sir. ओ भाई साहब, ये कुछ आते हैं पेरेंट्स उधर गल्फ से, मतलब नए नए पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो आते हैं अपने बच्चे को लेके आएंगे. उनका बच्चा ऐसा भी 3-4 साल का पहला बच्चा अगर होता है ना, दे वुड लाइक, क्या इंग्लिश में बोलते हैं, आप यहाँ सिट करो. हैव यू हर्ड दोस पेरेंट्स? Yes, sir. Yes. आप यहाँ बैठो नहीं, पूरा इंग्लिश में, आप यहाँ सिट करो. फिर Yes, sir. आप पानी को ड्रिंक करो. ठीक है. फिर और क्या Yes, क्या sir. बोलते हैं भाई. देयर वाज वन, आई हैव वन रिलेटिव, शी वाज लाइक, हर सन ही हैड 2 वॉचेस और वो दोनों हाथ में घड़ी पहन के था. लाइक नो, वन वन हैंड वन वॉच.
वन हैंड वन वॉच. लेकिन बट आई मीन इट विल फील लाइक आप लोग को भी थोड़ा ऐसा ये क्रिंज लगता होगा, राइट? लाइक ऐसा आप लोग मतलब बच्चे हैं अभी थोड़ा सा ऐसे, बड़े होने के कगार में, तो आपको लगता है क्या है ये, या तो हिंदी बोल लो या तो इंग्लिश बोल लो. बट दे वांट टू टीच देयर चिल्ड्रन इंग्लिश ना, जितना हो सके, जितना या उनको आता है कम से कम, है ना. हाँ, और कभी कभी उन हम, लोग बच्चे लोग को हिंदी नहीं सिखाते हैं। हाँ यार ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, पता Yes, नहीं sir. क्यों। ये नहीं करना चाहिए कि हिंदी सिखाना ही नहीं है. लाइक एज अ टीचर आई अंडरस्टैंड दी स्ट्रगल भाई. अगर इफ यू नो हिंदी ना, योर मैथ विल बी सो क्विक, योर मैथ विल बी सो मच क्विक कि क्या ही बताएं हम. खैर, चलिए एनी वेट 40. नेक्स्ट इज, और ठीक है, चलिए अब आप लोग कीजिए, है ना. HCl एंड H2SO4. Also, I mean, sometimes what happens, like if both the parents are working, na, then the child, they don't have anyone to talk to. So basically, they talk to either their school friends, and most of their school friends will be talking English, or they will be Yeah. talking to their, even they will be also talking to their friends over some video games. And most of the, I think most of the like kids nowadays, they talk over video games only. Am I right? Hmm? Yeah. Yes, sir. Correct, है ना. So basically, they are always talking in English only. फिर वो हिंदी सीख ही नहीं पाते. I have one, what I can say, I have one uncle. मतलब वो मेरे रिश्ते में वो मेरा अंकल लगेगा, लेकिन वो हमसे भी छोटा है. वैसा रिलेशन, उनसे छोटा क्या मतलब, उनके फादर की शादी हमने देखी है, मतलब इतना छोटा है वो. तो मेरा वो चचा जो है उसको हिंदी नहीं आती है. ही लिव्स इन दुबई. हिंदी नहीं आती है. चलिए इतना कीजिए जरा. लेट मी थिंक ऑफ सम मोर. Why I'm giving this is because of two reasons, ताकि आपको पता चल जाए how to calculate the molecular mass or the gram molecular mass, and also we will be using these values very frequently. ठीक है, very frequently. Yes, sir. लाइक आपको हमने बताया था हम भी झारखंड से हैं. हाँ, yes, you told me. And last time when you asked me where I was from, I thought आप एरिया पूछ रहे थे, तो फिर I हाँ, thought हम नहीं बताया था आपका मैं एरिया. मुझे अपना एरिया नहीं आपको तो पता, याद मतलब है. झारखंड के अंदर के तरह मुझे नहीं पता था आप रांची पूछ रहे थे। हाँ रांची नहीं थे हम तो, पूछ रहे थे ना आपसे. आई टोल्ड दैट आई विल टेक द नेम्स, एंड फिर आपने बताया था रांची. हम लेकिन Yeah, भूल yeah, गए I यार. I knew आई वाज, that, but then I didn't know you were asking that. मुझे लगा कि आप पर्टिकुलर एरिया पूछ रहे, कौन से एरिया। ओ अच्छा अच्छा, रांची में कहाँ है, रांची में कहाँ से हैं आप, यदि हम पूछे तो. डोरंडा से हैं, कहाँ से हैं? आई मीन डोरंडा में मतलब मेरे मम्मी पापा और सारे लोग दूसरे दूसरे एरियाज में रहते हैं, तो मेरे एक चाचा डोरंडा में रहते हैं, और एक अंकल हिंदपीढ़ी में. हेम्पड़ी में रहते हैं, और है मेरी जगह हमको मम्मी कोई मस्जिद के पास रहती है। हम्म, मतलब मेन एरिया मुझे नहीं पता, मुझे बाकी एरियाज पता है। खानकाही मस्जिद है, शाही मस्जिद एक है, एक तो रांची हाँ, मेन मुझे रोड है. पता कहाँ है में। हाँ, मेन रोड के पास आई थिंक, मतलब वहीं आसपास कहीं। ओहो ये मस्जिद है, वहां पे फिर मेरी मेरी फुफू भी रहती है. आ, इधर एक मस्जिद है, वो बिल्कुल मेन रोड पे ही है वो मस्जिद. नाम है उस मस्जिद का. उधर ये पंजाब स्वीट्स उधर ही हाँ हाँ हाँ, है वहीं ना, पे। सही कह रहे हैं ना. हाँ, पंजाब स्वीट्स के जस्ट सामने में एक कैफे भी है. क्या क्या है नाम है कैफे का, कह रहे थे. और या अभी कहाँ रहते हैं आप, जद्दा में? हाँ, अच्छा रियाद में रहते हैं.
तो शिजा ने भेज दिया, आप कीजिए लाइक जल्दी कीजिए, शिजा ने भेज दिया सारा। भाई ये हो जा रहा है। करेक्ट 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 करेक्ट, वेरी गुड शिजा। Thank you, sir. आपका स्कूल स्टार्ट हो गया शिजा? No, sir. 1st September से start होगा। आई थिंक दैट विल बी द फर्स्ट डे यू आर गोइंग टू गो टू स्कूल, राइट? अभी तक आप स्कूल नहीं गई हैं शायद, नहीं सर। है ना? लाइका आप तो गई है ना स्कूल इस सेशन में? नहीं, मेरी स्कूल अभी नहीं चल रही है। अभी नहीं चल रहा, लेकिन आपने मतलब स्कूलिंग की है अभी, 11th की नहीं की है अभी? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, यू हैव नॉट। तो कौन से स्कूल में जाइएगा आप? ओह वेट, एडमिशन हाँ हो गया, मतलब आई एम गोइंग टू न्यू मिडिल ईस्ट इंटरनेशनल स्कूल। शिजा आपका कौन सा कहाँ हुआ है? International Indian School, sir. IISR. आए साहब। Both the campus of New Middle East and Indian International School, they are in the same area, right? I think so. उसका या फिर यारा इंटरनेशनल? Not close, sir. I नो, guess. नॉट क्लोज। Not close, I don't think so. Maybe the boys camp, is the boys campus same And no, आप the लोग का? girls on the boys' No, sir. campus for ISR is different, I think, in my Yes, state. sir. अच्छा अच्छा Even अच्छा। I'm from Riyadh, sir. हाँ हाँ, ISR बोले तुमको रियाज समझ में आ गया। Yes, sir. वैसे कहाँ है रियाज में ये? इंडियन इंटरनेशनल किधर है? Malas में Uh, ही है, sir. Malas. अच्छा, the मलस में girls ही is है। in Manas, and Yes, there's a sir. boys' Boys compound in campus is Rauda. very far away, sir. ये कहाँ है, बॉयज वाला कहाँ है? Rauda, man. हाँ, वहाँ भी रहा है तो यार, टू बिग यार फॉर अ सिटी। Yeah, it is really big. It'll take you 3 hours to travel from one end to the other sometimes. हाँ बट समटाइम्स इन द सेंस आई अंडरस्टैंड द ट्रैफिक देयर ना। पता है आपको ट्रैफिक क्यों होता है रियाज में? No way. No, sir. I will tell you the reason. Like what happens in like Saudi is that like, if two cars hit even a bit and एक गाड़ी का बस शीशा टूट गया इसका, लाइक हेडलाइट्स वगैरह कुछ ऐसा टूट गया, फाइन, Yes. then they will stay there. They will wait Yes. for the insurance company to come. The insurance company will come. It will take the photo. फिर वहां पे सेटलमेंट कुछ होगा, उसके बाद फिर वो गाड़ी निकलती है आगे। like even if there is a scratch or something, then they will stay there. अब एक गाड़ी Yes. रुकी तो फिर बाकी सारे, दैट इज द मेन रीजन। व्हेन आई फर्स्ट हर्ड ना कि मतलब तो मेरे भैया ने ऐसे बताया था कि अरे एक्सीडेंट ना, तो उसकी वजह से बोले इतना एक्सीडेंट होता है। आई हैव हर्ड अबाउट सऊदीज दैट दे आर वेरी क्रेजी अबाउट देयर कार्स एंड बाइक, बट इतना एक्सीडेंट तो नहीं। नहीं नहीं, एक्सीडेंट नहीं, मतलब थोड़ा सा स्क्रैच भी लग जाता तो रुक जाते हैं। आपका हुआ लायका? नहीं हुआ अभी तक? So one second, sir, I'm doing the last CH format. ठीक है, आई एम राइटिंग फॉर द इनिशियल वंस, ओके। आपने भेज दिया क्या? हाँ, यहाँ तक तो सही है। व्हाट अबाउट द रेस्ट? Do you guys have biology or maths? Laika, what do you have? My stream is PCB. And what about you, Shiza? PCM, sir. अच्छा, आपका maths है। What about the others? Laika, CSE 3 निकला? हाँ, एक second sending. 100, 16, again 16, नहीं 32 है ना, 15, 16, 32 and 28। चलिए ठीक है, यहाँ तक है।
Now, uh, so okay. We were not present in the last lecture, Siddha, but we said that, for example, if I have 48 pens, this would mean how many dozens? 48 pens, it means how many dozens? Four does. 4. So basically what we are doing, 48 divided by 12, correct? That's the funda. Yes, sir. No, that's the main thing, right? So if I want to get dozen, I divide by dozen. What did I say? If I want to get, Yes, sir. yes sir नहीं कहा हमने कहा if I want to get dozens, बोलिए. If you If want I to want get to, dozens, I divide by dozen. yes, sir. We divide by dozens. ऐसे ही हो रहा है ना? So this is the like a generic thing that you can apply anywhere. If you want to get dozen, you will divide by dozen. Similarly, if you want to get moles, you will divide moles. Does that make sense? Yes, sir. Okay. Now it depends that given to you. For example, if number is given to you, if number is given and you want moles, then you will divide by the Avogadro's number. But if mass is given and you want moles, then you will divide by what is the definition of mole as mass? It is molar mass. Does this make sense? Like and Shika? Yes, sir. Make Yes, sense, sir. like a? Okay. Yes, sir. So what we can say that number of moles is equal to, no, basically we are right formula, but this is very generic thing, na? It's, for example, you don't know and you must not have learned about the formula to calculate dozens. Similarly, this is also very basic and logical thing that number of moles will be equal to whatever the given mass is divided by the molar mass. Number of moles, it is represented as small n, as small n. Given mass is represented by W and molar mass is represented by capital N. Write this down. Like you're done. Yes, sir. Only some questions. Calculate the number of moles for following. 36 grams of water. Let us suppose 20 grams of NaOH, 200 grams of calcium carbonate, 22 grams of CO2. Calculate for of ammonium chloride
चलिए इतना ही कैलकुलेट कीजिए। Excuse me, sir. टेल मी शिजा। So once, please, can you show the slide where you were writing the, molar mass of the elements? You have not written this. Done, sir. Just I got a doubt for one of it, sir. Okay, okay, okay. If you're done, send the answer on the Zoom chat. Yes, correct, Laika. शिजा ने भी भेजा है क्या? अच्छा, शिजा ने भेज दिया आंसर। ओके ओके। शिजा, फॉर द लास्ट वन, आर यू श्योर शिजा? Just a moment, sir. I'm rechecking.
Sir, in this question, will the SI unit be gram or gram per mole? What are you asking? For the answers, do we Sir, write 2 grams or like no, 2 no, gram per mole? Or... एक सेकंड आपको तो ना ग्राम लिखना है ना ग्राम पर मोल लिखना ये जस्ट हैव टू राइट द मोल्स ना योर कैलकुलेटिंग डजन ऐसे डजन होता है वैसे डजन लिखते हैं ना मोल के लिए क्या लिखेंगे मोल राइट तो द आंसर विल बी इन द यूनिट्स ऑफ इस तरह से होता है देखिए 36 फाइन 36 ग्राम्स डिवाइड बाय 18 grams per mole ये होता ना given Yeah. mass by molar mass so grams and grams will get cancelled and you will get 2 inverse will go above it will become mole make sense Okay. Yes. है ना Thank you, sir. so this will be what 0.5 mole this will be 2 moles अच्छा by the way as we write जैसे ग्राम होता है ना this is gram and short form is G है वैसे this is mole and the short form is MOL okay Yes. for 22 grams of CO2 it will be 0.5 mole this will be 2 mole okay Shiza has corrected the answer Yes, sir. yes what about 120 grams of C2H6 उसके लिए बताइए जरा yes Shiza correct like I just waiting for you third लाइका आपने कुछ और निकाल दिया है यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स हाँ हाँ हाँ, ठीक है कीजिए दोबारा कीजिए नहीं यू कैन नाउ जस्ट प्रोसीड वन स्टेप मोर करेक्ट 4 moles fine so I hope you will be able to like do the problems of, if the mass is given we can calculate the number of moles ठीक है just similarly we can also do a few I think it's also also which of the following has maximum number of atoms maximum number of atoms है ना so first one is 1 gram of Mg its molar mass is 24 1 gram of lithium its molar mass is 7 1 gram of helium 1 gram of Ag its molar mass is 108 ठीक है are you guys able to understand the question in your head you solve like what you have to do Yes, sort of. sort of ठीक है fine try it Yes. 1-2 minutes
Do you guys have any answers? Should I explain, like and Shiva? I've Yes, got sir. one answer. चलिए देखो. Let me explain. See, Yes, sir. we have the mass, right? So from mass, we have to go to atoms. But we cannot directly go to atoms. We'll first of all calculate the number of moles. And whatever be the number of moles, from there we can get the number of atoms. Right? If I have 1 mole, that will be 6.022 10 to the 23 atoms. It will be 0.5 moles and 0.5 and so on. Yes or no? सही है? Yes, Yes. sir. So basically, if I have x moles, then the number of atoms will be x into 6.022 into 10 to the power 23. And this will be same. For example, अगर हमको x moles मिला इसका y mole मिला इसका z मिला इसका a moles मिला, so that you can understand that this number is not going to do any difference. Whatever option has highest number of moles will have the maximum number of atoms. Does that make sense? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. What did I say? What did I say? The option which has largest value of mole will have maximum of atoms. Can you repeat that, please? The value with the largest number of Will moles will have have maximum. maximum number of atoms. Make sense now? Yes. Now, Yes. number of moles can be given by given mass upon molar mass. One more thing I can see that given mass is not going to make any difference because all the given mass is same. Correct? Hai? Yes, sir. Does that make sense? Right? Like 1 gram, 1 gram, 1 gram. All of the options are having 1 gram. That means no matter what you are going to take, only the molar mass is different. So molar mass is going to make the difference. So I can say that mole, it is inversely proportional to molar mass. Correct? Yes. So the option with least amount of molar mass, least value of molar mass, will have the highest number of moles. Does that make sense? Yes, sir. So which one has the least value of molar mass? Which one has least value of molar mass? He, sir. He, है ना? That is 4 helium. Like आपको समझ में आया? Yes, sir. ठीक है? So see, we did not have to do any calculations now. And this question it was asked in NEET 2020. Copy this down. Raise your hand if you're done. Whether have you guys thought of like any career path? Like, do you want to become? Do you want to do MBBS or engineering? Do you guys have that in your mind? Yes. It's like what's on your Yes. mind? I'm MBBS? going to try for NEET. Yeah, MBBS. So from India or from somewhere else? I think from my Riyadh itself, I'll give NEET. No, you will give NEET in Riyadh only, but you want to do, see, some people they give NEET just to qualify and then they go abroad in Russia or Kazakhstan or Ukraine and there they pursue the MBBS course. So do you want to do the same or you want to study in India? I think I'm going to study in India, maybe. I Study. haven't really decided. You have not decided. So, but name, you have to decide and start preparing because if you want to do MBBS in India, then the competition is very high, right? If you want to give NEET and get a government medical college, एक है आपके यहाँ रांची में, पता है आपको कौन सा है? नहीं. नहीं पता है आपको, रिम्स रिम्स करके एक है. It's a good college. Right, next, definition of mole as volume. What about you, Shiza? Anything in your mind right now? Engineering side, sir. Engineering.
Have you thought of any particular branch? No, sir, not yet, sir. Not yet. So you will be giving names, right? At least IIT का मन Yes, नहीं sir. है आपका? IIT का मन नहीं है? अभी तक डिसाइड नहीं किया सर. The definition of mole as volume occupied by one mole of at STP. What is STP? 0 degree Celsius. 0 degree Celsius and 1 bar pressure. ठीक है? The volume occupied by 1 mole of gas at this particular temperature is called molar volume. Molar volume and is equal to 22.4 liter. We take this as 22.4 liter. ठीक है? See, actually, this what is STP? It is standard temperature and pressure. Right? So standard temperature pressure, it has the old definition is 0 degree Celsius and 1 atm pressure. And at this particular case, the molar volume was measured to be 22.4 liters. The new definition of STP is 0 degree Celsius and 1 bar pressure. At this time, molar volume, it is measured to be 22.7 liters. Right? But for calculation purposes, you are always going to use 22.4 liters. अगर आपके स्कूल ने बोला नहीं 22.7 यूज करना बिकॉज एनसी दे हैव यूज्ड समवेयर 22.7 आल्सो, बट अगर नीट और जेई की बात करें तो वहां पे 22.4 ही चलेगा. इन मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस आल्सो यहाँ पे यूज 22.4 ओनली. If there is any calculation which will be easier if you use 22.7, then there will we can use 22.7. But in general, you please remember we have to use 22. Until and unless your class teacher they say that no you have to use 22.7, then we can use 22.7. लेकिन अभी तक जो भी calculations वगैरह हैं सब कुछ 22.4 के ही हिसाब से, right? In almost all the textbooks. So we can also write number of moles is equal to number of moles is equal to the volume of gas at STP divided by value of mole as volume is what 22.4. So volume divided by given volume divided by what 22.4 will give you the number of. जैसे dozen के लिए divide by dozen, mole के लिए divide by mole. If number is given, divide by Na. If mass is given, divide by molar mass. If volume is given, divide by molar volume. That is equal to 22. Yes, sir. Copy this down. Let me know once you're done. You can, if you know how to raise hand on Zoom, please raise your hand if you're done. Yes, sir. तो एक बात बताइए आप लोग, can we start can I call you in one more batch? We are doing thermodynamics thing. I understand thermodynamics is not coming in your syllabus of half yearly, but it will be easier for us to cover the syllabus in the short duration of time if you can at least just attend the classes. Just attend the classes, keep making, Yes, sir. keep answering questions. Yes, sir. कर सकते हैं? ठीक है. Then on Tuesdays and Thursdays you will be having 2 chemistry classes. Both the classes will be of 1.5 hours. Okay. हाँ. Apart sir. from that, apart from this 1.5 hour lecture, what you need to do is you need to give that assessment. आप लोगों ने assessment दिया होगा, right? Like and Shita, हाँ. है ना? Yes, sir. अब 5 marks 5 question assessment. तो बस ये 2 चीज आप कीजिए. होमवर्क वगैरह के हम आपको अभी प्रेशर नहीं देंगे, एटलीस्ट फॉर द थर्मोडायनेमिक्स क्लासेस. ओके. और आप देख रहे हैं कि सवाल तो मतलब हम करा ही देते हैं.
ड्यूरिंग द लेक्चर्स ओनली आई ट्राई टू डू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, है ना, एनसीईआरटी वगैरह कवर करने की हम कोशिश कर ही देते हैं क्लासरूम में। चलिए फाइन, Yes, देन वी sir. कैन, इफ यू कैन स्टार्ट थर्मोडायनेमिक्स, तो hopefully you will not have any problems in thermodynamics. No, sir. नहीं, नो सर, आपको थोड़ी ना पता, तो हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है ना कि यू हैव नॉट स्टडीड दिस चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, है ना। अगर इस चैप्टर का कोई कंसेप्ट वहां पे आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो सकती है आपको, बट लेकिन नहीं आना चाहिए हमको, जहां तक याद आ रहा है। मोल वगैरह आएगा, मोल वगैरह तो आप लोग पढ़ ही ले रहे हैं अभी, है ना। ऑल दीज डेफिनेशन यू हैव ऑलरेडी लर्न। Yes, sir. एक सवाल लिखिए, डन राइटिंग, डन बोथ ऑफ यू। Yes, sir. Excuse me, sir. या टू मी। Sir, actually, for my there's an upcoming unit test coming up for me, sir. So can I get covered by these two lessons, sir? Structure of atom and some basics concepts of chemistry, sir. Frankly, they come to बोलते हैं हाँ हाँ हम करा try करके शेफा। I mean, we cannot do justice to these chapters. Like when is the exam, by the way? Note down तो हमने किया था, जहाँ तक याद है हमको। Is that right? In September you have the UT, right? Yes, sir. अच्छा, आपको हमने ये सारी चीजें पढ़ाई थी। Yes, sir. तो रिकॉर्डिंग्स तो मिल जाएंगी आपको, you can get the recordings, Yes. but regular classes is a bit not possible because these chapters are not going, like structure of atom नहीं जा रहा है, मतलब किसी भी बैच में नहीं चल रहा है अभी। Yes, We sir. have, ठीक है, ये दो बैचेस हैं, T1 T2, इन दोनों में हो चुका है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कब, लेकिन अभी तो आपको इवन लाइक दिस चैप्टर इज आल्सो अ बिट डिफिकल्ट टू कवर कंप्लीटली, है ना, शायद एक दो लेक्चर ऐसा बच जाए। Yes, ओके, sir. लेकिन क्या कीजिएगा फिर आप बताइए, रिकॉर्डिंग देखिएगा। Yes, sir. ठीक है, आई विल आस्क देम टू सेंड यू द रिकॉर्डिंग्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर आल्सो। ओके, Yes, sir. Structure of atom as well as some basic concepts of chemistry, sir. सब बेसिक कंसेप्ट हम लोग कर रहे हैं ना। Okay, मतलब starting में okay, yes, yes, sir. कब है आपका एग्जाम? Yes, sir. I was absent on one of the class, so the recording is already there, sir. हाँ, इट इज ऑलरेडी। अब ये बताइए आपका एग्जाम कब है? सर सितंबर को एक एग्जाम है, सर. सितंबर कब है? सितंबर में? Yes, sir. सितंबर में Just a second, sir. अच्छा, आप लोग है पता ना, हाँ पता नहीं। Calculate the number of atoms in 5.6 liter of O2 gas. Yes, Excuse Shiza. me, sir. Yeah, tell me. Sir, it is on 8th, sir. 8 सितंबर। Yes, तो sir. एक सेकंड हमको देखने जरा, दो क्लास और दो क्लास, चलिए ठीक है, वी विल ट्राई टू कवर इट अप। Yes, sir. For 8th of September, there is structure of atoms, sir. स्ट्रक्चर ऑफ एटम का है 8 सितंबर को। Yes, sir. फिर से ना अभी UT1 भी मैंने अटेंड नहीं किया था, सर, तो इसलिए री एग्जामिनेशंस वो लोग कह रहे थे कि दे विल कीप इट बाय 20th और 18th लाइक दैट, सर. ओके, चलिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर इज एक्चुअली आई मीन बिट ह्यूज चैप्टर। आपका कौन सा आ रहा है लाइफा? व्हाट चैप्टर डू यू हैव इन दिस? एक्चुअली हम लोग को पोर्शन अभी तक नहीं मिला. They'll only give us the portion like they've told us vaguely, but they haven't given us the portion yet. तो अभी assessments होगा, उसके बाद portion मिलेगा. So I think हम लोग का भी अभी we'll have the, I think we'll start the molecular wala chapter in school and we'll have to finish it really quickly because I think we're going to have that. केमिकल I just बॉन्डिंग एंड have, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। yeah, I think we're going to have that one, but we haven't really started it yet, so I don't know how we're going to cover it.
Okay. Study static. Try this question. Calculate the number of atoms in 5.6 liter of O2 gas at STP. क्या कीजिएगा सबसे पहले calculate the number of moles. Once you calculate the number of moles, you can calculate the number of atoms also. ठीक है? फिजा आप सबसे ऐसे ही बात करती हैं. Excuse me. Can I say something? Sir, I didn't get you, sir. Not get me. हम ये पूछते हैं. आप सबसे ऐसे ही बात करते हैं कि excuse me sir. Can I say something? Kind of, पूछ sir. पूछ. Kind of. हमसे ऐसे ही पूछ लिया कीजिएगा. ठीक है? ऐसा नहीं बिल्कुल सर. एक मिनट सर. ऐसा नहीं सर. ये सवाल है. ठीक है शिवा? Yes, sir. हम्म. Yes, Shiza, correct. Laika, are you doing it? Yes, sir. Did you get the number of moles? Yes, sir. I got How much is it? Oh, yeah, correct. That is the number of moles, right? yes, sir. One thing you will understand is that you try to keep things in fractions and decimal में convert कीजिए if you are getting the last answer. Right? For example, for number of moles volume at STP divided by 22.4. 5.6 divided by 22.4. This will be equal to 1 upon 4. Okay. Here this has 1 upon 4 moles. Now number of atoms will be, tell me what, like a number of atoms will be Wait, what, sir?
It will be equal to how much? Number of atoms will be equal to? Atoms will be equal to How many atoms in one O2? 2 atoms. 2. And how many O2 I have? I have this many O2, 1 by 4 moles. So 1 by 4, and what is mole? 6.022. 6.022 into 10 to the power of 20. Okay, so now you can do C. 2, 2 sir, and 3.011. So you'll get the number of atoms as 3.011 into 10 to the power 23 atoms. Okay. Okay, so it will be helpful if you keep things in fractions until the last step. है ना? In the last step, convert everything to decimals. उससे पहले आप क्या कीजिए, fractions में ही रखिए. Sir, if we even write it as 3 into 10 power 23, is it correct, sir? Not in school. Yes, sir. Depends on the teacher. Depends on the teacher, I would say. अगर हम टीचर रहेंगे तो हम तो या तो बोल देंगे क्लास में रूम में कि आप 3 into 10 power 23 लिख दीजिए, चल जाएगा, या फिर हम ये कह देंगे कि नहीं 3.011 ही लिखना है. इट इज बेटर टू आस्क योर क्लास टीचर. Yes, sir. ठीक है. आई होप बोथ ऑफ यू आर डन राइटिंग. नहीं, कुछ आपके पास इस तरह से भी सवाल आ सकते हैं. Calculate number of atoms, number of electrons, protons, and neutrons. Do you know about these things, electrons, protons, and neutrons? Yes, sir. Laika, what about you? Yes, sir. ठीक है. Number of in 60 grams of ethane. ठीक है. ठीक है. बताइएगा ना. Don't write now anything. Don't do anything. Tell me what is ethane. What is ethane? CH4. CH4 तो मीथेन होता है ना. ethane is C2H6. C2H. C2H. ठीक है. C2H6. So we have C2H6, and what is the mass of C2H6 that we have? We have 60 grams. ठीक है ना. अच्छा, और एक और चीज लिखिए. Third thing that will calculate the volume occupied and volume occupied. ठीक है. So C2H6 we have how many? 60 gram. What is the molar mass of C2H6? We have already seen that it is 30 grams, right? You must have calculated Yes. by now once at least, right, Shiza? ठीक है. So Yes. first of all, we'll calculate the number of moles. This will be equal to how much? 60 by 30. That will give you 2 moles. Now, each mole of like if I take one ethane molecule, it will have how many atoms? 8 atoms. If I want to calculate the total number of atoms, the total number of atoms will be equal to how much? 8 into 2 into the Avogadro's number Na. That will be equal to 16 Na. In short, does that make sense? Yes, sir. Right? Now I want to calculate the number of electron, proton, and neutron. So I will first of all see C2H6. C2H6 में आपके पास, if I want to calculate the number of proton कितना होगा? In one carbon I will be having how many protons? 6 protons. In 2 carbons I will be having 12, and in 6 hydrogen I will be having 6 protons. That will be equal to total number of 18 protons. Make sense? Yes. The total number of electrons will also be same. That is 18 electrons. क्या ख्याल है? Yes. Yes, sir. Right. But the number of neutrons, see, we don't have any neutron in hydrogen. That is why its mass is 1. No, that mass 1 is only because of the proton. If there was neutron, so mass 2 हो जाता. In carbon, why does it have 12 even though its atomic mass is only 6? Because it has 6 protons and 6 neutrons. So we have only 12 neutrons in this particular C2H6 because hydrogen के पास कोई भी neutron नहीं होता
है. Do you guys know about this, that there is no neutron in hydrogen? पता थी ये बात, नहीं पता थी? नहीं पता थी. Yes, sir. मतलब याद नहीं था या फिर पता नहीं था? याद नहीं था. याद नहीं था, ठीक है. अच्छा, इसके बारे में भी आई एम वेरी प्रिसाइज कि मतलब क्या कहना है आपको, है ना. याद नहीं होना और पता नहीं होना में बहुत फर्क है. करेक्ट लाइका एंड शिफा, यस. है ना? है ना. चलिए ठीक है. बहुत सारी चीज सीखिएगा आप 11th एंड 12th क्लास में, है ना. तो पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज सीखिएगा. चलिए, so we have this many these things not in each molecule of what in each molecule of C2H6. So if I talk about the total number of electrons, तो एक हमारे पास कितना है, 18 है. And how many molecules I have? I have 2 moles. 2 moles means 2 into Na. That will be equal to 36 Na of what electrons we have. Number of protons will be same. That will be equal to how much? Same, 36 Na. But if I talk about the number of neutrons, so number of neutrons. Neutron may we write 0 because it does not have any charge. This will be how many neutrons in one molecule? We have 12 neutrons in one molecule. How many molecules we have? 2 moles. That is 2 Na. And that will be equal to 24 Na. One more thing we have to calculate. It was the first thing. This is the second thing that we have to calculate. The third thing we have to calculate is the volume occupied. So we have 2 moles. We know that 1 mole occupies 22.4 liters. So 2 mole will occupy, tell me how much? 44.8. 44.8 liters. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes. Copy this down. Raise your hand once you are done. अच्छा, शिजा एंड लाइका, आप लोगों से बस ना एक चीज की रिक्वेस्ट ये है दैट इफ यू स्टार्ट कमिंग इन द 2 बैचेस ना, तो प्लीज एब्सेंट मत कीजिएगा, है ना. अननेसेसरली एब्सेंट मत कीजिएगा. और एनी हाउ मान लीजिए एब्सेंट आपको, देन प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग बिफोर द नेक्स्ट क्लास. बिल्कुल इस चीज पे एकदम बिल्कुल उसूल बना लीजिए कि आपको क्लासेस वगैरह मिस नहीं करनी. नॉट 10th स्टैंडर्ड, लाइक इवन इफ यू हैव वन चैप्टर, जैसे एक चैप्टर मान लीजिए 10th स्टैंडर्ड का होता, कोई भी सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या फिर मैथमेटिक्स, 10th क्लास में आप अगर 2 दिन पहले भी स्टार्ट करिएगा प्रिपेयर करना, किसी भी चैप्टर का प्रिपरेशन हो जाएगी. सही है ना बात? सही Sir. Yes, sir. है ना. एटलीस्ट यू विल गेट रेस्पेक्टेबल मार्क्स इफ यू प्रिपेयर. आप स्टार्ट ही करो 2 दिन. 2 दिन के अंदर कोई भी चैप्टर नहीं है जो 2 दिन के अंदर कंप्लीट नहीं हो जाए. आप सिर्फ 2 दिन पूरा पूरा 2 दिन लगा दीजिए. आप सिर्फ उसी चैप्टर में कोई और सब्जेक्ट मत पढ़िए, तो आराम से कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा क्लास 10th का, है ना. हम तो कहेंगे एक दिन में भी हो जाएगा. एक दो चैप्टर, कुछ कुछ चैप्टर्स को छोड़ के. मोस्ट फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए मेंस्ट्रुएशन, और इवन इट इज लास्ट चैप्टर, लेकिन बहुत सारी चीजें आपने पहले पढ़ी हुई हैं मेंस्ट्रुएशन के बारे में ना. क्लास 6 7 से आप मेंस्ट्रुएशन पढ़ते हुए आ रहे हैं. तो यहाँ सम काइंड ऑफ फ्लो, एक तरीके का दिमाग लगता है जो आप लगाते आ रहे हैं. सिमिलरली आपके पास चैप्टर जैसे स्टैट्स वगैरह है, तो ये एक एक दिन के चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं भाई. कुछ चैप्टर्स आपके पास हर, आप बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ दोस चैप्टर जो एक दिन में शायद कंप्लीट नहीं हो. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एक दिन का चैप्टर है. आप अगर बैठिए उसमें दीजिए 10 घंटे, आराम से हो जाएगा. बट यू कैनॉट डू द सेम थिंग फॉर एनी चैप्टर इन 11th स्टैंडर्ड ऑफ एनी सब्जेक्ट. मैथ में उस
सेट चैप्टर को हटा दीजिएगा। सेट्स पढ़ा है आपने? सेट्स, देयर इज वन चैप्टर ना, सेट्स इन मैथमेटिक्स, है ना? सेट्स को अगर हटा दें हम, आपके पास कोई भी ऐसा, आई डोंट थिंक इन दिस एनी चैप्टर which can be completed in 2 days। ठीक है, तो कभी भी दिमाग में अपने ये मत रखिएगा कि हम 2 दिन पहले तैयारी हो जाएंगे। फिर उसमें जानते हैं 2 दिन में क्या होगा? 2 दिन में आप पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा, पेपर में आपको दिखेगा अरे यार ये कुछ तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन यू वुड नॉट नो व्हाट टू डू। आपको समझ में आएगा सवाल, सवाल वाल मतलब समझ में आएगा, इन द सेंस यू बी लाइक, ऐसा नहीं लगेगा कि क्या ही पूछ दिया, कुछ ही नहीं आ रहा है। ऑल ऑफ द थिंग्स विल अपीयर फेमिलियर, बट आपसे कोई भी सवाल नहीं होगा 2 दिन की तैयारी में। ठीक है, प्लीज ये कभी भी यस दिमाग में मत रखिएगा कि 2 दिन में हम तैयारी कर लेंगे किसी भी एक चैप्टर की। ठीक है, आप कम से कम एक हफ्ता पहले चैप्टर को स्टार्ट कीजिए पढ़ना। देन ईच एंड एवरी चैप्टर डिमांड्स अ सर्टेन काइंड ऑफ अप्रोच। एक दिन तो आपको वो अप्रोच समझने में लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह के सवाल हम लोग कर रहे हैं, इस तरह के सवाल, लाइक यू वुड नॉट हैव डन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस इससे पहले। यू वर you never handled this large number 10 to the power 23 in any word problem type of situation, है ना? तो हर एक चैप्टर का एक पर्टिकुलर अप्रोच है। ठीक है, वो अप्रोच आपको समझने में एक दिन लगता है, फिर उसके बाद यू विल बी यूज टू, और फिर वहां पे आप फिर तेजी ला सकते हैं। कभी कभी 2 दिन भी लग जाएगा, है ना? समटाइम देयर विल बी सर्टेन टॉपिक्स which will require certain approach। ठीक है, चलिए, so that's it for today। We have completed the मूल concept right now। बी गिवन होमवर्क, और होमवर्क प्लीज उसको कर लीजिएगा। एंड देन वी आर गोइंग टू मीट ऑन ट्यूसडे, और ट्यूसडे को हम लोग मिलेंगे एट 4 o'clock, है ना? 8 to